Hi everyone. Okay, so how are you guys? And nice to meet you everyone. So thank you so much for watching my webinar, my YouTube video. And guys, my name is Pratyaksh Rastogi, and very good evening to you all. And I hope that you guys are good and you guys are safe and you guys are at your homes and you guys are studying for your NEET exam, right? Because आपका नीट एग्जाम जून या जुलाई में एनी टाइम इट कैन हैपन इन द लास्ट वीक ऑफ जून और इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई सो बी प्रिपेयर्ड गाइज ओके यू स्टिल हैव टाइम for 2 to 3 months, right? So just put all of your efforts, whatever you can do, whatever you can put in. And I am very much sure and I'm very much confident in you all that you will be able to crack your exam with very good marks, okay? So, beginning with my video, first of all, I just wanted to make sure if my audio and my video is absolutely clear, guys. Are you guys having any kind of glitch? If so, then kindly let me know so that I can correct it out right now. I, uh, you can see I have mentioned a scale in my video. So the scaling is from 1 to 10. So 1 being the poorest quality and 10 being the highest quality. So I am mentioning this scale, so you can just rate my video as per this, so that I will be able to correct the video. I'll be able to correct the configuration. If you guys are able to see me, if you guys are able to hear me properly, that's wonderful. Okay, and I'm sorry, I am having cough right now, so if I'll cough in between the class, then excuse me in prior. Okay, perfect. So guys, I hope that you all are doing well with your exam, and I am really 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 worried for you guys because I don't want any person, any student to get demotivated during this time. Okay, this is a high time, and you all have to be very confident, very aware, very active for your preparation. You don't have to miss even a single day, even a single chance to just study, right? आप स्टडीज करो, आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करो. यू ऑल्सो आप you know you can do different things. You can start revising your previous work. You can start अभी कुछ बच्चों के एक दो चैप्टर्स रह रहे होंगे और इवन ज़्यादा रह रहे होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज ट्राई टू कवर योर सिलेबस. अगर आप रिविजन नहीं भी कर पाते हो, दैट विल अफेक्ट बट नॉट दैट मच. बट अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, then yes, you can that chapter, the questions from that chapter, they can be at stake, right? you I would suggest you, please do not miss any any questions जो आपको इस बात में रिग्रेट हो कि मैंने ये पढ़ा क्यों नहीं, राइट? आपको आता नहीं, दैट्स डिफरेंट थिंग. बट आपने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं, दैट विल बी रियली रिग्रेटफुल, राइट? सो गाइज, इट विल बी माई सजेशन, अगर चैप्टर्स नहीं कंप्लीट करे हैं, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल ऑफ द थ्री, राइट? In physics you need numericals, you need concepts, you need simple formulas to solve those questions, and you will get that information only once you will read the chapter, right? Similarly with chemistry and for bio, you need to read the chapter at any cost, because bio is all theoretical, right? And if you will not read the theory, then how will you be able to solve the questions, right? So based on that, I have mentioned three emojis in front of you, so you can see on your screen. The first emoji signifies that the preparation is not going good. You are still lacking behind with your syllabus. The revision is also not going so proper. So you can ping me the first emoji. Otherwise, the second one says that you are fine, like okay with your syllabus. It's not so much fast, it's not so much slow. You are going on track. Whereas third says that everything is going super duper fine, right? You are doing revision, you have completed the chapters, you are solving previous year question papers. If so, then I'm very, very much happy. But yes, guys, please, the students with the emoji first and second, it would be my request. Please complete your syllabus. Please start solving previous year question. That really gives you a better idea of what kind of questions are going to be coming to your examination. Okay, so start focusing on that. Okay, not wasting much more time, let me introduce myself. I have introduced so many times. So my name is Pratyaksh Rastogi,
and I'm a physical therapist by profession. So I hope that you guys know who is a physical therapist. A physical therapist is a doctor who treats, or you can say, who corrects the conditions related to your neuromuscular, neuromuscular system, right? We have neural system, we have muscular system, and we also have skeletal system, right? Which in right, so all these three systems, whatever conditions we have, there is always a rehabilitation requires. देखो, अगर if I talk about medicine, okay, आपको बुखार हुआ, बहुत हाई फीवर हुआ, बहुत ज़्यादा हाई फीवर हुआ, आपने डॉक्टर से इलाज करवाया, आपकी बीमारी ठीक हो गई, बट आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए? आप इतने दिन तक बेड रेस्ट पे थे, यू वर नॉट एबल टू मूव, तो हो सकता है आपके अंदर वीकनेस आ गई हो, राइट? आपके अंदर कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, एनी लाइफस्टाइल चेंजेस कैन हैपन। मे बी आप कुछ लोगों को होता है दैट after a paralysis attack they cannot even move, their muscles become so weak, right? That is what we call as paralyzed muscle or a flaccid muscle. So in order to in order to maintain the strength of that muscle, we will need a rehabilitation, and that is what is a job of a physical therapist, right? So I am a physiotherapist and I deal with that, right? So basically that is related to your treatment of your soft tissues, muscles, ligaments, tendons, bones, nerves, blood vessels, all of that, right? Now third thing is, I am doing researches in the same field. Okay, I'm doing researches in sports, in participation of those soft tissues in your sports. Okay, and apart from that, I'm also inventing something. I'm also, discovering something. I'm trying to, basically, it's a kind of like, you can say, I'm working in that field. I'm researching about those, about the other facts related to your medical science, right? So this is all I liked to introduce, so that you could know me better. Okay, now apart from that, not wasting much more time, so let's start the topic for now, for today, which is genetic disorders. So guys, in genetic disorders, now this is a part of your law of inheritance chapter, right? Which is a genetics, which is a chapter of your class 12th, right? So guys, genetic disorders means those disorders which are related to your genes, which are related to your transmission from your parents to your offsprings, or there is an involvement of DNA, gene, chromosome, whatever we can call, right? Whatever is related to your sex chromosome, your autosome, anything which is related to your DNA, chromosome, and your genes, that disorder will be called as genetic disorder. Okay, so there are several disorders what we are going to study in this session. First of all, an analysis of traits in a several of generations of a family is called a pedigree analysis. Now, आपको ये पता चल गया, आपको ये पता चल गया कि जो फादर थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं दैट फादर को सम जेनेटिक इशू, राइट? फादर को कुछ जेनेटिक इशू था, आपको ये पता चल गया है, बट अब उसके बाद क्या? नाउ अगर आपको ये पता लगाना है, ओके जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको ये पता लगाना है कि फादर के बाद आने वाली जनरेशन, फॉर एग्जांपल जनरेशन 1, जनरेशन 2, अगर इनमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है, so how will you be able to detect that? With the help of this pedigree analysis. So generations के अंदर the transmission of genes, the transmission of diseases, the transmission of the characters, all will be decided by this pedigree analysis. Okay, so you must know about it. Now you can see in pedigree analysis the inheritance is represented by a family tree. So हम एक tree type बनाते हैं. For example, this is father, this is mother, they mate together, they produced 4 offspring, 2 boys, 2 girls, right? So this is what we call as a family tree. Can you see this has this is just in a form of a tree with the stem, branches, right? So similarly we are calling this as a pedigree analysis in the form of a family tree.
over generations. Okay, next what we have is okay, so first of all guys, I would like to inform you that we also have a YouTube channel. Okay, the same YouTube channel which you are watching me right now from. So the name of the channel is APJ Academy NEET. So excuse me. Okay, so I would request you guys to please subscribe to our channel. Okay, and you will be able to get notifications about our upcoming classes, because guys, we are launching a very special course for you all, which will be a crash course. In that crash course, we will try to cover all the most important topics for your biology, physics, and chemistry. Okay, so you all have to stay tuned for that, and you all have to subscribe to the channel so that you will not miss any video. Okay, you will not miss any update related to the any video. Okay. Okay, so next, now these are the symbols for a pedigree analysis. So this is for male, you can call it as a square, this is circle, whereas this is a polygon, which is sex unspecified. It means you can call it as a transgender, right? Next, what we have is affected individuals. So affected individuals will be colored. So if there is a colored which is filled in the figure, so you can call it as affected. It means that these have disease present. Okay, disease, or you can say disease causing genes present. Okay, next we have mating. So this is a symbol for mating once we are joining them together. If we are joining them by two lines, it means mating between relatives, consanguineous mating. Okay, it means that the relatives are getting meet. Now this is what we call as a tree or a chart, where you are able to see that the children, these are the parents, whereas these are the children. Okay, so this is a tree. Parents with male child affected with disease. Okay, now this is a male child which is affected. अगर ये affected है तो आपको सिंपली समझ जाना चाहिए एक चीज, if the child is affected whereas यहाँ पे कोई भी filling नहीं है, there is no filling of color, it means any of the parent will be carrier. This is what we call as carrier. देखो, आपको डिजीज, अगर आपको कोई जेनेटिक डिजीज हो रही है, इसका मतलब आपकी फैमिली में वो जीन्स प्रेजेंट होंगी, राइट? बट ये जरूरी नहीं है कि वो जीन्स प्रेजेंट हैं लेकिन डिजीज शो हो ही रही है. डिजीज ऐसा होता है कि देयर आर टू टाइप्स, यू नो, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. समटाइम्स अ जीन कैन बी डोमिनेंट, समटाइम्स अ जीन कैन बी रिसेसिव. Now in a father as well as in a mother, the gene can be recessive. If the gene will be recessive, then you will represent this with empty shape. Whereas if the gene will be dominant and there will be a presence of a disease, then you will fill that with color, right? So similarly in father and the mother, the gene is only gene is present, whereas the disease, the condition is not present. So we are left leaving them empty, right? Whereas in child, the gene is getting expressed. It can be gene for any disease: color blindness, hemophilia, phenylketonuria, Alzheimer's disease, Parkinson disease, whatever, right? So this is what we call as condition present. Okay, condition, or you can say disease present. Now what we have is DNA is the carrier of genetic information. As we all know that DNA is ultimately the structure which is responsible for transmission of affected or non-affected genes from parents to the offsprings. Hence, it is transmitted from one generation to the other without any change or alteration. However, changes or alteration do take place occasionally. Such an alteration or change in the genetic material is referred to as mutation. Now guys, there is a sudden change. अगर एक पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल आई एम ड्रॉइंग एन एरिया जिसके पूरे एरिया के अंदर पॉपुलेशन है, राइट? अब इस छोटी सी, बहुत छोटी पॉपुलेशन है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक छोटा सा गांव ले लिया, उस गांव के अंदर फॉर एग्जाम्पल देयर आर 1000 पीपल लिविंग. ओके, 1000 पीपल लिविंग. अब उन 1000 पीपल में से किसी एक पर्सन को कोई भी जेनेटिक चेंज आ गया, उस जेनेटिक चेंज की वजह से उस एक पर्सन की जनरेशन्स के अंदर भी चेंज आएगा, राइट? सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज म्यूटेशन. दैट इज अ सडन चेंज इन अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन
over a very short period of time, which we call as a mutation. Okay, so this is an example of mutation. Okay, so mutation can also lead to the genetic disorders into the generations. Like अगर आप हिरोशिमा एंड नागासाकी का एग्जांपल लो, so in America, आपने अगर पता हो, so America had bombarded the atomic bomb over Hiroshima and Nagasaki very decades back, right? Now what happens, since then the generations are getting affected. किसी का कान नहीं होता, किसी की आंख नहीं होती, किसी का सर नहीं, किसी का हाथ नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता. There are all abnormal conditions the people born with, right? So those we can call it as mutation, because after the atomic attack there was a sudden change in the genetic combination of the individuals. Okay, so that is what we call as mutation. Now if we talk about the genetic disorders, so they can be classified into two types: Mendelian, okay, Mendelian disorders, and the second one what we call as chromosomal disorders. Okay, so give me 1 second. So now these disorders, they are mainly determined by alteration or mutation in the single genes. Now आपकी जीन है, ठीक है, अब उस जीन के अंदर कोई ऑल्टरेशन हो गई, या तो कोई ऑल्टरेशन हो गई, दैट इज आपका डीएनए सीक्वेंस में कोई ऑल्टरेशन आ गई, या देयर इज सम म्यूटेशन. ओके, सो दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका जेनेटिक कॉम्बिनेशन चेंज हो जाएगा, आपकी जेनेटिक सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से देयर आर high possibilities that you or your generation will develop certain genetic disorder. Okay, the pattern of inheritance of such Mendelian disorder can be traced in a family by the pedigree analysis. Most common prevalent Mendelian disorders are, now the Mendelian disorders which are very common to occur are hemophilia. So hemophilia, these are all your sex linked disorders. Okay, these are all your sex linked disorders. Okay, so sex linked disorders means that they will all be able to transfer with the help of genes. Okay, so these are genetic disorders: color blindness, we have phenylketonuria, we have cystic fibrosis, we have anemia, sickle cell anemia, we have thalassemia, and we have much more. Okay, now guys, let us discuss them one by one. But first of all, now you can see the line which is Mendelian disorder can either be dominant or recessive. Okay, so either it can be sex linked dominant or sex linked recessive. अब देखो, आपको पता होगा there are two types of chromosomes, right? What are those? X chromosome, right? X chromosome दोनों में प्रेजेंट होगा, फीमेल में भी होगा, whereas मेल में भी होगा, right? Whereas if you talk about Y chromosome, so Y chromosome is only and only particular to your male ones, because female do not have Y chromosome, right? So the X and X, okay, so this is for your female, this is the symbolic representation for your female, and this is the symbolic representation for your male genetic combination. Okay, now you guys, the disease is only peculiar to your X chromosome. जो X chromosome होगा, अगर उसमें कोई alteration आ गई है, कोई mutation आ गई है, जिसकी वजह से the genes are getting transferred from the parent to the offspring, then yes, you can call it as X linked, or you can say simple X linked. Now you can either use dominant, मैं बताता हूँ how will you be able to identify whether it is dominant or recessive disorder. Okay, now one interesting thing comes, which is X linked dominant and X linked recessive. अब देखो अगर X linked recessive है, इसका मतलब X linked recessive है, इसका मतलब कि अगर इन दोनों में से कोई एक अलील अफेक्टेड है, तो जो डिजीज है वो शो नहीं होगी, किसके अंदर, पेरेंट के अंदर. सो शो डज नॉट शो. ओके,
does not show, whereas so this is for your recessive. Recessive मतलब वो जीन छुप जाती है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज कैरियर. जीन तो छुप गई बट जीन उसके अंदर अभी भी प्रेजेंट है, वो एक्सप्रेस नहीं हुई बट इट इज प्रेजेंट, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज कैरियर. Whereas if I talk about similar example I am taking, but in this the disease is showing. Disease अगर show हो रही है, disease is showing, so it means it is dominant. Okay, है दोनों X क्रोमोसोम से related, that's why we are calling it X linked. Whereas recessive है, इसका मतलब वो show नहीं होगी but it will work as a carrier. Dominant है तो वो show होगी, okay, वो अच्छे से एक्सप्रेस होगी पेरेंट के अंदर भी, सो इट विल बी एक्स लिंक्ड डोमिनेंट. ओके, नाउ यू कैन सी, नाउ इट इज एविडेंट दैट एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल प्रोजेनी. अब जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं उसके अंदर फीमेल अगर कैरियर है, मैंने आपको बताया कि उसके अंदर फीमेल कैरियर होगी, पेरेंट जो होगा वो कैरियर होगा, सो पेरेंट फीमेल विल ऑलवेज बी कैरियर इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव. Okay, so parent female will always be a work as a carrier X-linked recessive के केसेस में, whereas अगर हम X-linked dominant की बात करें तो पेरेंट जो होगा वो कैरियर नहीं होगा बट पेरेंट के अंदर फुली एक्सप्रेशन आएगा, सो कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ द जीन. ओके, नाउ व्हाट वी, अब नाउ इसमें एक और चीज़ थी कि जो अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव है एंड फीमेल इज कैरियर, इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड इन मेल्स फॉर श्योर. जो मेल चिल्ड्रन होगा, मेल चाइल्ड या चिल्ड्रन, अगर दो मेल्स हैं तो चिल्ड्रन, एक है तो चाइल्ड, सो दे विल बी अफेक्टेड, वो अफेक्टेड होंगे. फीमेल कैरियर है तो मेल अफेक्टेड होंगे. कौन से मेल? मेल चाइल्ड, नॉट द मेल पार्टनर, मेल चाइल्ड. ओके, let us talk about color blindness now. So now we will talk about the different X-linked recessive disorders. So the first one will be color blindness. Color blindness means that the person is not able to distinguish between the colors. जो पर्सन होता है वो रेड और ग्रीन के बीच में, रेड ब्लैक के बीच में, ब्लू ब्लैक के बीच में, they can not distinguish. जब आपने देखा हो, if any of you has been to a driving license test, तो आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, राइट? उसमें आपको यू हैव टू टेल विच कलर इट इज. अगर आप अपनी जगह उस इंसान को वहां बिठा दो जो कलर ब्लाइंड है, सो दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू टेल ईदर दैट कलर इज ब्लू, रेड, ग्रे, ग्रीन, वट एवर. ओके, सो दिस इज अगेन अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ड्यू टू डिफेक्ट इन ईदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई. आई के अंदर वी हैव रोड्स एंड कोन सेल. जो कोन सेल्स होते हैं उनके अंदर रेड एंड ग्रीन कोन्स ऑफ आई, दे आर इम्पेयर्ड, उनके अंदर कुछ ना कुछ इम्पेयरमेंट होती है, रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर. ओके, सो रेड और ग्रीन कलर के बीच में वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाते, दे रिजल्ट इन फेलियर. दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम. It occurs in about 8% of females and only about 0.4% of females. Why? फीमेल्स की रेशियो इतनी कम क्यों है? बिकॉज फीमेल्स कैन वर्क एज अ कैरियर, राइट? फीमेल्स कैरियर ज़्यादा होती हैं बट फुली एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इज सीन इन वेरी लेस नंबर ऑफ फीमेल्स, राइट? Whereas in males, if you would see, so 8% of the 8% of the males have this condition. Now this is because the genes that lead to red green color blindness are on the X chromosome. जो हमारी रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस की जीन्स होती हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन योर एक्स क्रोमोसोम. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर. नाउ द मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम. मैंने आपको बताया एक्स एंड वाई, फीमेल्स के पास दो होते हैं, एक्स और एक्स. उसके बाद नाउ द सन ऑफ द वुमन हु कैरीज द जीन हैज अ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड. मैंने आपको बताया कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर देयर आर हाई चांसेस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर देयर आर हाई चांसेस दैट फीमेल विल ट्रांसफर टू द मेल प्रोजेनी, राइट? So there are 50% of the chances that
carrier colorblind female will transfer those genes to a male, and the male will result ending up color blinded. Okay. Okay, so guys, before moving ahead, I would like to inform you guys that we are having this offer right now, which is going for you all. So guys, आपको सबको पता होगा that these days we are giving you a very special feature or a benefit, which is one-on-one mentorship. आपने ये चीज़ और कहीं नहीं देखी होगी, because a mentor is that who is able to help you 24/7. आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है इन अ क्वेश्चन और इन एनीथिंग रिलेटेड टू योर नीड, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, यू आर नॉट ओके विद द टीचर और यू आर नॉट ओके विद द सिलेबस, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आपको कोई लाइन समझ नहीं आ रही, आपको कोई डायग्राम समझ नहीं आ रहा, आपको टाइम टेबल में हेल्प चाहिए, यू नीड टू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल फॉर यू टू स्टडी, or you need someone to share your feelings, your emotions, your demotivational feelings about your NEET exam, about your career, then you have mentors available, right? So those mentors are available over the Telegram channel. You all know that you all, I hope that you all are joined into our Telegram channels, and if not, then you can go to the Telegram channel and search for APG Academy NEET and APG Academy JEE as per your targets, and yes, you can connect it with the mentors available over the groups, right? So we have various mentors, they are various mentors each for the specific subject. For biology, I am the mentor, and a ma'am called Sadaf is also a mentor. So we will be able to help you, we'll be able to guide you properly. So guys, along with that mentorship, we are also going to launch a very special crash course for you all, in which we are going to cover all the important topics for your all the 3 subjects, whereas we will also be able to cover, we will also provide you the structured PDFs. आपको हम structured classes के साथ PDFs देंगे. You will be getting the the course material. आपको पढ़ने के लिए online PDFs मिलेंगी, which you will be able to access anytime from our website. So in order to avail all these features, we are just offering you a one-time fee for 1 month, which is 2990, right? So this is a very minimum fee which you can get, because you can see that there are other institutions as well who charge in lakhs for these all services, but we are only charging you 3000 rupees, right? So it's not a big deal, guys. 3000 rupees, you can go out for a shopping and you end up spending this much amount, right? So this is not a big deal, but yes, if you want to avail benefit, if you want to grab a seat in a government medical college with very good marks, then yes, this is the right time that you will choose this course. Okay, next guys, so continuing, now the mother is not herself colorblind, so that's what I told you. Mother colorblind nahi hogi, mother will serve as a carrier, whereas the progeny will be a colorblind progeny. Okay, so now let's come to the question. So we'll solve a question for color blindness, because I have seen so many questions, they can come into a NEET exam. A color blind man, now a color blind man, so color blind man ka formulation kya hoga? XCY, because XY is a normal man, whereas agar hum X chromosome ke aage ek C laga de, so it will be a color blind man. So this will be a color blind man. Now this colorblind man marries, this will marry a woman with normal sight. उस woman की sight normal थी. She is not even a carrier, because she has no history of color blindness. अगर उसकी family में कोई history नहीं है, then she can never be a carrier, right? Now they will cross, and what will they end up is, now this X will first of all combine with X, so this will form XCX plus XCX plus XY plus XY, right? So मैम तो कलर ब्लाइंड था, बट आप देख रहे हो कि उसकी मेल प्रोजेनी इज नॉट कलर ब्लाइंड. यू कैन सी हिज मेल प्रोजेनी इज नॉट कलर ब्लाइंड, बट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन, उनका ग्रैंडसन. यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर उनकी जो ये बेटी है विच इज अ कैरियर, ओके, इफ शी इज मेटिंग विद अ नॉर्मल पर्सन, XCX
and she is mating with XY normal person, so they will have the child as XCX XY XXXY, right? So again all are normal, only the female person is colorblind, whereas is carrier, not a colorblind. But if we talk about a boy, if he will mate with any other woman outsider, so for example this plus if he is mating, so there will be no progeny which will be colorblind. You can all see that, right? All are normal, right? So it means that none of the none of the grandson will be the colorblind person. Okay, so this is how we solve the questions. So similarly we have for hemophilia. Hemophilia is again a sex linked disorder which shows its transmission from affected carrier female to the sum of the male progeny, which widely studied. Okay, a single protein that is a part of the cascade of proteins involved in the clotting of blood is affected. So हीमोफीलिया में बेसिकली क्या होता है कि एक जैसे आपका अगर कोई इंजरी होती है, so you have clotting of blood. For that clotting of blood you have 12 different factors. You have 12 factors for clotting of blood, right? So out of these, one factor is missing, one factor is absent, and due to that the blood clotting does not occur. Okay, so blood continues flowing. Now due to this, in an affected individual a simple cut will result in non-stop bleeding. The heterozygous female carrier for hemophilia may transfer the disease to the sons. Again wahi hai, this is X-linked recessive. It means the female, if the female is carrier, for example hemophilia ke H le lete hain, so if the female is carrier then she can transfer that to the male progeny. Okay, the male progeny will be can be the hemophilic. Okay, so this is for hemophilia. In hemophilia, one blood clotting factor is absent, due to which the blood clotting does not occur. And if the person gets injury leading to the blood loss, so the blood will not stop or the blood will not clot and it will continue bleeding. Okay, female parent. Next is what we have is the possibility for a female becoming a hemophilic is extremely rare. अगर एक फीमेल की बात करें, so females are mostly the carriers, but they are not affected completely with hemophilic condition, because mother of such a female has to be at least carrier and the father should be hemophilic. जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मदर है जो कैरियर है, ओके, XHX प्लस अगर फादर जो है वो अगर एक हीमोफिलिक फादर है, फादर एक हीमोफिलिक फादर है, सो बेटी अगर हम बेटी का जेनेटिक कॉम्बिनेशन जीनोटाइप देखते हैं तो क्या बनेगा, XHXH XHY XHX XY, राइट, यही बन रहे हैं. इसका मतलब जो बेटी का जीनोटाइप है दैट विल बी हीमोफिलिक. सो एक फीमेल को हीमोफिलिक बनने के लिए द पेरेंट हैज टू बी हीमोफिलिक, whereas the mother has to be a carrier for hemophilia. So it is very rare condition, because both the partners, it is very rare to be both the partners to be hemophilic or carriers of hemophilic. So the family pedigree for Queen Victoria shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier for the disease. अब क्वीन विक्टोरिया, अब हम हीमोफीलिया को और क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया इज ऑल्सो known as royal disease. Why we are calling it royal disease? Because Queen Victoria thi, she was belonging to a royal family. So Queen Victoria ko she was a carrier for hemophilia. So many of her descendants were hemophilic because Queen Victoria was a carrier. Okay. सिकल सेल अनीमिया. सिकल सेल अनीमिया में आपको क्या समझ आ रहा है, सिकल सेल मतलब cylindrical shape of a cell. This is an autosome linked recessive trait. Autosome क्या होता है, it means sex chromosome is not involved. We have two types of chromosomes, autosomes and sex chromosomes. So autosomes are body chromosomes. Autosome are body chromosomes other than सेक्स क्रोमोसोम. से सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स और वाई को हटा के जो क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी के अंदर, दैट इज 22 पेयर्स
आउट ऑफ 23 दीज आर ऑटोसोम्स, whereas जो 1 पेयर होता है दैट इज योर सेक्स क्रोमोसोम. ओके, सो अगर ऑटोसोम्स में कोई म्यूटेशन या ऑल्टरेशन आती है, सो दैट विल बी रिजल्टिंग इन सिकल सेल अनीमिया. सो इट इज अ ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. गाइस इस चीज को याद रखना, हीमोफीलिया एंड योर कलर ब्लाइंडनेस दैट इज एक्स, और यू कैन से एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, whereas sickle cell anemia is autosome linked recessive trait. Okay, next what we have is the disease is controlled by a single pair of allele HBA and HBS. Out of these three possible genotypes, only homozygous individuals for HBS show the disease phenotype. अगर हम सिकल सेल अनीमिया की बात करें तो सिकल सेल अनीमिया में obviously this is anemia है तो relation to your hemoglobin, your blood. So HBA and HBS दो तरीके की हमारे पास जीन्स होती हैं. ओके, अगर इंडिविजुअल के अंदर होमोजाइगस अलील्स मिलती हैं दैट इज HBS, इसका मतलब दैट इज अफेक्टेड विद व्हाट, सिकल सेल अनीमिया. वेयरएज अगर हमें मिलता है HBA and HBS, so this is your carrier, this is the carrier because it has a presence of S as well as A. Okay, so it will not be unaffected but it will be unaffected but it will be a carrier. Okay, so it can transfer these sickle cell anemic genes from them to the offsprings. Okay, so you can see that there is a 50% chances of transmission of this mutant gene to the progeny, thus exhibiting sickle cell trait. Sickle cell means that the RBC कैसा होता है, ओवल होता है. RBC ओवल होता है and it has a depression to carry out oxygen molecules, but this RBC converts into cylindrical, so the oxygen carrying area becomes less. ये less हो जाता है जिसकी वजह से the oxygen demands are deprived. Okay, the defect is caused by the substitution of glutamic acid by valine. अब जो DNA की जो चेन होती है उसमें जो glutamic acid होता है which is an okay, so ये चेंज हो जाता है valine से. So glutamic acid is replaced by valine at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule. जो HB मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो हमारी ग्लोबिन्स चेन बनती हैं, ओके, सो उसके अंदर जो बीटा ग्लोबिन चेन होता है, बीटा ग्लोबिन चेन में 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट्स ग्लूटामिक एसिड चेंजेस और गेट्स रिप्लेस्ड बाय वेलाइन. ओके, अगर ऐसा होगा देन यस द पर्सन विल हैव सिकल सेल अनीमिया. Okay, so you can see the substitution of amino acid in the globin protein result due to the single base substitution. सिर्फ एक ही बेस पेयर का सब्सटीट्यूशन होता है. जैसे अगर GAG है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, GUG. ओके, सो इतना सा सब्सटीट्यूशन यानी एक सिंगल बेस पेयर का सब्सटीट्यूशन होता है, बट दिस अकर्स एट द सिक्स्थ पोजिशन ऑफ व्हाट, बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ hemoglobin molecule. Okay, this will result into sickle cell anemia. The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization. अब जो म्यूटेंट यानी जो म्यूटेटेड जो GUG है हमारा बना था वो पॉलीमराइजेशन में जाएगा अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ द RBC, और RBC की शेप को चेंज कर देगा टू अ सिलेंड्रिकल शेप. तो दिस इज अ बायकॉन्केव डिस्क. ये एक बायकॉन्केव डिस्क बन जाती है ऐसे टाइप ऑफ, ठीक है, यानी ऐसे. ओके, एंड इलोंगेटेड सिकल सेल स्ट्रक्चर. तो ये एक इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर यानी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाता है. You can see the diagram as well. This is a normal hemoglobin, normal red blood cell structure. This is a sickle cell hemoglobin or red blood cell shape. Now you can see the 6th position over here. So glutamic acid is replaced by valine. Okay, so this will result into your sickle cell anemia. After that, phenylketonuria. In phenylketonuria, this is inborn error of metabolism is also inherited as the autosomal recessive. This is again your autosomal recessive disease.
The affected individual lacks an enzyme that converts amino acid phenylalanine into tyrosine. जो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होंगे, अफेक्टेड पर्सन, दे विल लैक एंजाइम, उनके अंदर एंजाइम एब्सेंट होगा. कौन सा एंजाइम? एंजाइम एब्सेंट होगा जो फिनाइल कीटोन्यूरिया को कन्वर्ट कर देगा. वो एंजाइम जो फिनाइल कीटोन्यूरिया को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, वो एंजाइम इसके अंदर एब्सेंट होगा. अगर वो एब्सेंट है, इसका मतलब दिस विल नॉट गेट कन्वर्टेड. सो फिनाइल कीटोन्यूरिया का ओवर एक्युमुलेशन हो जाएगा. यही लिखा है, एज अ रिजल्ट फिनाइल एलेनिन इज एक्युमुलेटेड. ओके, सो यहाँ पे फिनाइल एलेनिन होगा. आई एम सॉरी, फिनाइल कीटोन्यूरिया इज द डिजीज इटसेल्फ. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो यहाँ फिनाइल एलेनिन होगा. फिनाइल एलेनिन विल बी ओवर एक्युमुलेटेड बिकॉज द एंजाइम इज एब्सेंट. So phenyl alanine is not getting converted to your tyrosine. Now, as a result of this, phenyl alanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid and other derivatives. Accumulation of these in brain. अब ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनाइल pyruvic acid. Okay, or this acid will accumulate into your brain and then it will result in mental retardation, and also your excreted through urine because of it poor absorption by kidney. तो फिनाइल कीटोन्यूरिया के अंदर आपका यूरिन का कलर ब्लैक हो जाता है. यूरिन बिकम्स ब्लैक. ओके, सो यूरिन ब्लैक क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल pyruvic acid. Okay, so this is about phenylketonuria. Now let's come to the thalassemia. In thalassemia, this is again an autosome linked recessive blood disease. ये भी एक blood disorder है. इसमें क्या होता है? When both the partners, they are unaffected carriers for the gene heterozygous, then this defect could be due to either mutation or deletion, which will ultimately result in reduced rate of synthesis of one of the globin chains, X, alpha or beta, that make up the hemoglobin. Okay, so hemoglobin की दो चेन्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा चेन. उन दोनों के में अगर इसमें कोई ऑल्टरेशन हो गई या म्यूटेशन हो गई या डिलीशन एडिशन कुछ भी, या इसमें, सो दे विल रिजल्ट इनटू थैलेसीमिया. ओके, this causes the formation of abnormal hemoglobin molecules resulting into anemia, which is a characteristic feature of the disease. Thalassemia can be classified according to which chain of hemoglobin molecule is affected. So hemoglobin abnormal hemoglobin बन जाएगा, abnormal hemoglobin production होगा. अब hemoglobin abnormal होगा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी लो हो जाएगी और ऑल्सो अनीमिया होगा, बिकॉज hemoglobin वहाँ नहीं होगा and less percentage of hemoglobin will result into your anemic conditions. Okay, so this is the part of thalassemia. Also in thalassemia, production of globin chain is affected, while in beta thalassemia, अगर हम थैलेसीमिया दो तरीके के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया जिसके अंदर अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी अफेक्टेड, बीटा थैलेसीमिया जिसके अंदर बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी अफेक्टेड. Thalassemia is controlled by two linked genes, HbA1 and HbA2 on chromosome 16 of each patient. Since it's an autosome recessive trait, so it will also be occurring through autosome and autosome number 16th. It is observed due to mutation or deletion on one of the more four genes. The more genes affected, the less alpha chain molecules produced. Okay, I'm sorry. Now in beta thalassemia is controlled by a single gene HBB on chromosome number 11. So alpha thalassemia में क्रोमोसोम नंबर 16 था और बीटा थैलेसीमिया में क्रोमोसोम नंबर 11 हो रहा है. ऑल्सो यहाँ पे HbA1 एंड HbA2 था और यहाँ पे HBB. गाइस इसको प्लीज याद रख लेना. क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस बिकॉज दिस इज अ tricky question. Tricky in the sense that students basically they overlook this kind of information and they end up losing marks for these answers. Okay, thalassemia differs from sickle cell anemia in that the former is a quantitative problem of synthesizing too few globin molecules, while the latter is a qualitative problem synthesizing
इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। थैलेसीमिया में क्या होता है कि क्वांटिटी कम हो जाती है ग्लोबिन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की, हीमोग्लोबिन कम बनता है, यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन कम बनेगा, एबनॉर्मल ज़्यादा बनेगा, सो अल्टीमेटली अनीमिक कंडीशन आ जाती है। वेयर एज सिकल सेल अनीमिया में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, सो दिस इज क्वालिटेटिव, क्वालिटी चेंज हो जाती है उसकी। वेयर एज यहाँ पे क्वांटिटी चेंज हो रही है, हीमोग्लोबिन बन तो रहा है बट एबनॉर्मल बन रहा है, सो क्वांटिटेटिव। okay okay next what we have is chromosomal disorder. Now let's move to the chromosomal disorders. So again, chromosomal disorder means that the involvement of chromosome is there. Which chromosome? Sex chromosomes. Like अगर for example हमारी deletion हो जाती है, that is there are two things, polyploidy and aneuploidy. Polyploidy के अंदर you can also see the line which is the chromosome disorders. On the other hand, these are caused due to absence or excess और abnormal arrangement of one or more chromosome. अगर किसी एक क्रोमोसोम के अंदर उसकी एब्सेंस हो या उसकी ज़्यादा एक्सेस हो या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो, ऑल दिस विल कम इनटू योर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। फेलियर ऑफ सेग्रेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। अब जैसे सेल साइकिल में हमने पढ़ा था कि हमारे फेजेस आएंगे, प्रोफेज प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज एंड योर साइटोकाइनेसिस, योर डायकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। सो साइटोकाइनेसिस अब क्या है कि सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स तो हो गया, लेकिन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स नहीं हो पा रहा है, दैट इज फेलियर। क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन ही नहीं हो पा रहा है, इट मीन्स it will be aneuploidy. Okay that is results in gain or loss of a chromosome. For example, in Down syndrome result in the gain of excess of extra copy of chromosome 21. chromosome 21 की एक extra copy बन जाती है, chromosome number 21 की extra copy, that is +1. okay, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है. सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर एन्यूप्लॉइडी, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ होगा कि आपका सेल साइकिल के अंदर आपका सेग्रीगेशन नहीं हो पाया होगा, जिसकी वजह से एडिशनल कॉपी वाज प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड इंटरनली. सो दैट इज डाउन्स सिंड्रोम. सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम में अगर हम देखें, सो लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज हैपनिंग, दैट इज अगर मेल है तो मेल में एक्स वाई की जगह क्या हो जाएगा, ये. ओके, ओ वाई, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज ओ वाई. It means X is absent. So that is what we call as Turner's syndrome. Okay. Similarly, अगर Turner syndrome occurs in females. So XX है तो ये OX हो जाएगा. That is one X chromosome is deleted. So Turner syndrome is for females and Klinefelter syndrome is for males. तीन होते हैं, Downs, Turner's, Klinefelter. ओके, जो टर्नर है दैट इज फॉर फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स के अंदर डिलीशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम हो गया है. वेयर एज क्लाइनफेल्टर इज फॉर मेल इन विच डिलीशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज रिजल्टिंग, सो इट फॉर्मिंग ओ वाई. ओके, फेलियर ऑफ सॉरी आई वुड नीड टू रिपीट इट, सो लेट्स इग्नोर दैट. यहाँ पे एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, सो इट इज एक्स एक्स वाई. ओके, failure of cytokinesis after telophase of cell division results in increase in whole set of chromosome, and this is what we call as polyploidy. This condition is often seen in plants जैसे coconut water. Okay, coconut water is result of your polyploidy only. The total number of chromosome in a normal human cell is 46. Total number of chromosome 46 होते हैं, out of which 23 pairs are produced. And out of those 22 are autosomal pairs and one pair is your sex chromosome. Okay, you can see sometimes, though rarely, either an additional copy of a chromosome may be included in an individual or an individual may lack one or any one pair of chromosomes. Okay, These situations are known as trisomy or monosomy of a chromosome. अगर एक पेयर एडिशनली आ गया है, that is XXY. XY में एक X जुड़ गया है, that is trisomy. और अगर जैसे ये तो हो गया हमारा क्लाइनफेल्टर का. सिमिलरली अगर मैं आपको टर्नर्स का बताऊं,
क्लाइनफेल्टर। ओके, स्पेलिंग का देख लेना बच्चों। अगर मैं आपको टर्नर्स का बताऊं तो टर्नर्स में डिलीशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, सो दैट इज मोनोसोमी। ओके, सो दिस इज टर्नर। डाउन सिंड्रोम में अगेन डाउन सिंड्रोम में 21 क्रोमोसोम नंबर 21 प्लस एक और जुड़ जाता है, सो अगेन दिस इज ट्राइसोमी, दैट इज एडिशनल। ओके, so Downs is also a result of your trisomy. डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? इट इज अगेन अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज रिलेटेड टू योर ऑटोसोमल, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 21 की ट्राइसोमी हो जाएगी। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डाउन। ओके, द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड, वो छोटी हाइट का होता है जो इंडिविजुअल होता है। उसके हाथ पाम्स के ऊपर जो हमारी पाम्स के ऊपर जो हमारे रिंकल्स बने होते हैं, दोज रिंकल्स आर एब्सेंट, देयर पाम्स आर फ्लैट, ओके, एंड देयर हेड इज राउंडेड, वेयर एज they are short statured, they are mentally retarded. You can see they have a small round head, they have furrowed tongue, they have partially open mouth, palm is broad, characteristic palm crease nahi, physical, psychomotor and mental development is retarded. Okay, क्लाइनफेल्टर में आपका क्या हुआ था कि इन क्लाइनफेल्टर यू हैड ट्राइसोमी, दैट इज एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम. सो इन दिस द कैरियोटाइप विल बी 47XXY. ओके, 47th क्रोमोसोम हमारा आ जाता है, हमारे टोटल 46 होते हैं, बट इसमें एक एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाएगा, सो इट विल बी 47 हाउ XXY. ओके, सो सच इंडिविजुअल्स दे हैव मैस्कुलिन डेवलपमेंट, उनकी मेल्स जैसी डेवलपमेंट होती है, बट दे ऑल्सो हैव फेमिनाइन डेवलपमेंट लाइक डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट विच इज कॉल्ड वी गायनेकोमास्टिया. So the whole body will be as like males, but there will be development of the breast, that will be what we call as gynecomastia. Is also expressed. Such individuals are sterile. Those are sterile, it means they do not or they are incapable to reproduce. Turner syndrome में क्या होता है? That is trisomy of X chromosome, so it will be Turner syndrome में deletion of X chromosome, so it will be XO. These females are also sterile and their ovaries are rudimentary, besides other features including lack of other sexual characteristics are also there. So these females are also sterile, that is incapable to reproduce, and and they also lack secondary sexual characters. उनके अंदर secondary sexual characters भी नहीं होते. ओके, सो टर्नर सिंड्रोम इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल. टर्नर सिंड्रोम में भी जो फीमेल्स होती हैं दीज आर स्टेराइल. सिमिलरली क्लाइनफेल्टर में भी जो मेल्स होते हैं दोज आर स्टेराइल. यू कैन सी दिस इज डाउन सिंड्रोम, सो यू कैन सी द स्मॉल राउंड हेड ऑफ द चाइल्ड. ओके, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है इनको, कुछ भी हो जाएगा हार्ट के अंदर बचपन से ही बाय बर्थ. दे हैव बिग एंड रिंकल टंग, उनकी टंग बहुत बड़ी होती है, बहुत जीभ बहुत बड़ी होती है और रिंकल्ड होती है. दे हैव ब्रॉड फ्लैट फेस, देयर बैक फ्लैट बैक ऑफ हैंड, उनके जो हैंड्स होते हैं वो उनकी बैक बिल्कुल फ्लैट होती है. एंड मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स पे बहुत ज़्यादा ही रिंकल्स, बहुत ज़्यादा ही लूप्स बने होते हैं. ओके, फोल्ड्स बने होते हैं बहुत ज़्यादा. पाम क्रीज ज़्यादा होती है. So this is what is your Klinefelter and this is your Turner. So Klinefelter is for males and you can see everything is fine, whereas the development of breast is seen. Whereas, so this is your Klinefelter is with breast development. Okay, for Turner it is occurring in females, and in this the secondary sexual characters are absent, and this is what is your Turner's syndrome. So Klinefelter में आपका क्या हुआ? XXY, और Turner's में आपका क्या हुआ? XO और OX. Okay, so guys, this was all about your genetic disorders. Now let me introduce you to Altademy. So we have some special features for you all. First of all, we will provide you theory.
Like right now I'm taking your class and I'm providing you theory, the same way we will continue giving you the classes, and we will put on all the theory inside the chapter, inside the PPT, so that it will be helpful for you to grab the knowledge. We will also provide you study material. In that study material, we will be able to give you the PDFs, the PPTs for the chapters which have been covered and which are very much crucial for your NEET exam. We will organize the webinars, okay, like the webinars we are organizing right now, so that it will be very much interactive to have a class in between you and us, okay. We will also give you homeworks like a self assessment. So right now guys, we are launching our free test series. हमारी test series आने वाली है. In that test series there will be minor and major test. So I suggest you guys, I suppose you guys to attend those test series, and for that you can join our course for this month, which is only and only applicable for 2990 rupees, and we will also give you homework checks, okay. Apart from that, so these are the subscription plans which are available at our website, which is APJ Academy, and you can see all these plans. So interactive live classes, structured courses, live test, physical notes, one-on-one mentorship. This is very important, and this is all you can experience in your groups. Live doubt solving, mock test, and additional special courses. So we have Light, Smart, and Proficient. Again, for further information, you can visit our website. These are the 2 QR codes for our Telegram channel. So guys, if you have not joined the Telegram channel up to yet, I would request and I would suggest you all to join our Telegram channel so that you will not miss any other coming update. Okay, because अब NEET exam आने वाला है, then yes, we have to be very active. We have to be very interactive with each other, right? So हम आपको वो सिखा सके, हम आपको पढ़ा सके, और आप जितने भी डाउट्स हो, you can all ask us at any point of time. Okay, so guys, this was all for today, and I hope that you like the session. If you like it, then hit the like button below, subscribe to our YouTube channels, and yes, hit the bell icon. So thank you so much guys, a very good evening to you all, and take care. We will meet tomorrow at the same time, which is at 7 p.m. sharp. So thank you so much guys, take care, bye bye, good night.